Welcome to Best IS. Myself, I am Bhushan. This is our new initiative for current affairs program, that is C.A.P, which will be very useful for IS, PCS and other major competitive exams. My main purpose is to work for a student and uplift their knowledge. It is today, 30th January 2017. So the most important news of today's are King Roger the 18th. Roger Federer extended his record for most Grand Slam titles, 18, beating Nadal in an epic Australian Open final. Rafa and Sampras are at number 2 with 14 titles. At 35 years, 5 months, 21 days, he is the oldest man in Open era to win a Grand Slam since Ken Rosewall won Australian Open in 1972 at the age of 17. The next news is civil society groups protest WHO move to give Gates Foundation official role. About 30 civil society groups from 16 countries have protested against what they see as a lack of transparency in the proposal to admit the Bill and Melinda Gates Foundation into official relation with the WHO and as a non-voting member of its government body, the World Health Assembly. I want to give you the little detail about the Gates Foundation Trust. Direct investment include Coca-Cola $466 million, Walmart $836 million, Walgreens Boots Alliance, a large multi-national pharmaceutical drug retailer, $280 million. The next is from the Times of India speaking tree. Divinely inspired extraordinary leader. Mahatma Gandhi was no ordinary leader. There are those who believe he was divinely inspired, and it is difficult not to believe with them. He dared to exhort non-violence in a time when the violence exploded on us. He exhorted morality when science, technology and the capitalist order had made reluctant. He replaced self-interest with group interest without minimizing the importance of self. The next news is Oscar Buzz dead. China clips activist wins. Ye Hian, one of the China's most prominent women rights activists, huddled in her unheated apartment on the outskirts of the Beijing, waiting to learn if the documentary that propelled her to international fame would receive an Oscar nomination. Last month, Hooligan Sparrow, a documentary following her activism on behalf of sexually abused children, made a shortlist for the Academy Awards. The next news is Indian held at US airport. Gujarat government MEA claim no acknowledge of businessman arrest. Amid enhanced security measures and immigration restrictions placed by the Trump administration, a Baroda-based businessman, his name is Praman Radhakrishnan, businessman was taken into custody at the airport in the US state of the North Dakota. The next is the editorial of the Hindu newspaper, Gandhi for our troubled times. Mahatma Gandhi's approach to politics in terms of resistance and protest beyond a conception of domination over others provides a potential antidote to the contemporary crisis of democracy. This article was written by Rami, and I once asked my student at Jindal Global University about Mahatma Gandhi's relevance in today's India. Gandhi is only a name and an imager of today. They commenced coldly as if I had been taken in by romantic view of India, which lived in Gandhian non-violence as a utopian dream from the harsh reality of everyday life of Indians. Mahatma Gandhi was able to define a new vision of independent India, not by a nostalgic return to the past, but by creating the possibility of a critical public culture in India. The next news is Modi के एग्जाम टिप्स, स्माइल मोर स्कोर मोर. देश भर में शुरू हो रही स्कूली परीक्षाओं में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने का
स्माइल मोर एंड स्कोर मोर का मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि छात्र परीक्षा के समय को जितनी खुशी से बिताएंगे उन्हें उतनी ही न ज़्यादा नंबर मिलेंगे। पीएम ने अभिभावकों से भी अपील की वे परीक्षा के समय परिवार के वातावरण को उत्सव का रूप दें। सेना को मिलेगी 52 कैलिबर क्षमता वाली शक्तिशाली तोप धनुष। देश की सेना को एक और शक्तिशाली तोप जल्द मिलेगी। यह धनुष का ही उन्नत वर्जन होगा। सेना आयुध निर्माण बोर्ड एवं डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस से मिलकर अब धनुष 2 के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। यह मौजूदा तोप धनुष से 4 किलोमीटर और अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता रखेगी। नेक्स्ट न्यूज, जीएसटी की जमीन तैयार करेगा बजट, बढ़ सकता है सेवा कर। बहुप्रशिक्षित सेवा वस्तु एवं सेवा कर दैट इज जीएसटी भले ही 1 अप्रैल 2017 से लागू होने नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार आम बजट में जीएसटी के लिए जमीन तैयार करने को कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली 1 फरवरी को आम बजट 2017-2018 पेश करते हुए सेवा कर की दरों में वृद्धि कर सकते हैं। सेवा कर की प्रभावी दर फिलहाल 15% है और आगामी आम बजट में इसे 16% के आसपास किया जा सकता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एडिटोरियल ऑफ दैनिक जागरण, नई विश्व व्यवस्था की संभावना। यह तो पहले से ही तय था कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह पहले दिन से ही अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुट जाएंगे। वह ऐसा करते ही दिख रहे हैं और इसलिए उनके आलोचक कुछ ज़्यादा ही चिंतित नजर आ रहे हैं, न केवल अमेरिका के भविष्य को लेकर बल्कि दुनिया की भावी दिशा को लेकर भी। ध्यान रहे कि दुनिया में बुनियादी बदलाव की पहली ठोस शुरुआत लगभग 100 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी और जो 30 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर पूरी हुई। पिछले 70 साल के लगभग वही मूल व्यवस्था थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ काम कर रही है। बीते कुछ महीनों के अंदर घटी 3 घटनाओं ने उसे फिर से एक नए बदलाव की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहली घटना ब्रेक्सिट की है। ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से अलग होकर जनमत पर इस संघ के अध्यक्ष ने कहा था कि वह सिर्फ यूरोपीय संघ के अंत को ही शुरुआत नहीं है बल्कि पश्चिमी सभ्यता के अंत की शुरुआत है। दूसरी घटना इटली की थी, हालांकि उसे कम महत्व दिया गया। इटली ने अपने युवा प्रधानमंत्री के संविधान संशोधन प्रस्ताव को जनमत संग्रह के द्वारा ठुकराकर एक प्रकार से यूरोपीय संघ की आकांक्षा पर मुहर लगा दी। यह माना जा रहा है कि इटली यूरोपीय संघ से अलग होने वाला दूसरा यूरोपीय देश होगा। तीसरी घटना अमेरिका में घटी और यह गैर पारंपरिक नेता डोनाल्ड ट्रंप की जीत के तौर पर सामने आई। So this is the most important news of today. I would like to say please share, subscribe and like because these all are very very important for all of you. So thank you very much. Wish you all the best. God bless you. God bless India.